Hello everyone, welcome to Tech Teachers. In previous video we have seen workshop part 2nd of the lesson that is an encounter of a special kind. Today we are going to see workshop part 3. To know about part 1 and part 2 the link is given in the slide. If you not have subscribed our channel, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the notification of the new video. Now let's begin from question number 6. That is, complete the following and write a paragraph on each of the given activities. Question is mother-child relationship. Here you can explain the relationship between mother and child. First point is given love and affection. See the next points. You can just write care, nursing, upbringing, keeping healthy, moral things, inspiration, encouragement, supportive, guidance. These are the points. From their points, you make the paragraph. See the next slide with the answer. Next point is the injured animal. How will you help? See the answers points. Pick up and bringing home, bandage first aid, provide water, food, keep it in safe place, will take care till it has enough strength. इन्हीं पॉइंट्स को लेकर पैराग्राफ बनाया गया है जो आपके सामने की स्लाइड पर है. Turn on the next question. Work in pairs and make as many words as you can using letters in the encounter. Encounter इस वर्ड से आपको 3, 4 और 5 लेटर वाले शब्द बनाने हैं जो कि बहुत आसान है. आप स्लाइड में आंसर्स देख सकते हैं जैसे कि 10, टोर, एंटर. See the next question. That is, translate the following proverbs in English. First is जन सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा means service to man is service to God. Second is पेरावे तसे उगवते. Answer is as you sow so shall you reap. Now we are going to see next question. Write a paragraph and give an appropriate title to it. यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स. नीचे दिए गए पॉइंट से आपको पैराग्राफ बनाना है और उसको नाम भी देना है. Points are given on the slide and answer also given. The title of the passage is Man's Best Friends, Birds and Animals. You can write other title also. Next question is complete the remaining blocks determining the टाइप्स ऑफ न्यूज़. दिए हुए खाली जगहों पर आपको अलग अलग टाइप्स के न्यूज़ के बारे में लिखना है. जस्ट लाइक सिटी न्यूज़, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक्स, बिजनेस. Now move on to next question. Read the following headline and write a news report. Follow the steps as given. हेडलाइन दी गई है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क में 8 साल के बच्चे पर टाइगर का हमला. इस खबर को आपको डिटेल में लिखना है जिसमें डे, डेट और प्लेस का नाम लिखा जाता है. फिर न्यूज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है. सेंटेंस बनाते वक्त थर्ड पर्सन यानी कि प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है. जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उस हादसे के एक दिन की बीत चुकी होती है यानी कि कल की न्यूज़ हमें आज मिलती है. We hope you understand today's workshop very well. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the notification of the new video. Thank you.